Dear students, Assalamu alaikum and welcome to your social science class. Well, today we will go through the lesson number 2 of your geography book. It is globe, latitudes and longitudes. So let's begin. Dear students, in the previous chapter you have read that our planet Earth is not a sphere. It is slightly flattened at north and the south poles and bulge in the middle. Can you imagine how it looks? You may look at a globe carefully in your classroom to get an idea. Globe is a true model or miniature form of the Earth. You can see the figure 2.1 that's there on this page. Please have a look. प्यारे बच्चों, आप ज़रा इस ग्लोब की जो तस्वीर है आपके पेज पे आपसे देख सकते हैं और क्लासरूम में आपका जो ग्लोब है उसको केयरफुली आप देख लें तो आपको पता चलेगा कि ये जो अर्थ है, अर्थ जैसा कि हमने पढ़ा है कि ये पूरी तरह से एक स्फीयर नहीं है, पूरी तरह से गोल नहीं है, बल्कि इसके जो पोल्स हैं, पोल्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ पे ये कुछ फ्लैट साइज फ्लैटनड है, कुछ थोड़ी सी फ्लैट है वहाँ पे, और सेंटर में ये बल्जड है। तो ग्लोब जो है ये इसका एक मिनिएचर फॉर्म है अर्थ का, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से ये ग्लोब है, तो ग्लोब इसका एक मिनिएचर मॉडल है। डियर फ्रेंड्स, globes may be of varying size and type. Big ones which cannot be carried easily, small pocket globes, and globe-like balloons which can be flattened and are handy and carried with ease. The globe is not fixed. It can be rotated the same way as a top spin or a potter's wheel is rotated. On the globe, countries, continents and oceans are shown in the correct size. ये जो ग्लोब होता है ये फिक्स नहीं होता है, बल्कि ये रोटेट करता है, स्पिन करता है, जिस तरह के पोटर का वो व्हील होता है, तो इसी तरह से ग्लोब भी ये जो है स्पिन करता है। तो इस पे कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट्स और ओशंस जो हैं वो बिल्कुल अपने एक्यूरेट शेप और साइज़ में दिखाए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, ग्लोब जो होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, तो आप कोई भी ग्लोब देख सकते हैं जो आपके स्कूल में अवेलेबल है। आजकल वो बैलून ग्लोब्स हैं जिनको आप कैरी भी कर सकते हैं। Dear students, it is difficult to describe the location of a point on a sphere like the Earth. Now the question arises as to how to locate a place on it. किस तरह से कोई जगह हम ज़मीन पे ढूंढ लेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। Dear friends, we need certain points of reference and lines to find out the location of places. तो किसी जगह को ढूंढने के लिए हमें कोई point of reference चाहिए। You will notice that a needle is fixed through the globe in a tilted manner which is called its axis. तो आप देख लेंगे कि ग्लोब जो है इस पे एक नीडल फिक्स की गई है, तो जिस पे ये रोटेट करता है, तो ये टिल्टेड मैनर में, ये यानी एक तरफ से ये झुकी हुई है ये नीडल, तो इसको हम एक्सिस कहते हैं। 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles. तो जो 2 पॉइंट होते हैं जिन से ये ग्लोब की नीडल जो है गुजरती है, ये 2 पोल्स कहलाते हैं। जो ऊपर की तरफ होता है उसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो
इसके डाउन में नीचे होता है तो उसको साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. The globe can be moved around this needle from west to east, just as the earth moves. But remember, there's a major difference. The real earth has no such needle. It moves around its axis, which is an imaginary line. तो ये जो हमारा ग्लोब है ये मूव करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. बिल्कुल इसी तरह अर्थ भी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है अपनी एक्सिस पर. लेकिन एक बात याद रखनी है कि ये जो ग्लोब में नीडल हमने लगाई है, अर्थ में कोई नीडल वीडल नहीं है, वहाँ कोई देयर इज नो नीडल एट ऑल इन द अर्थ. दैट्स एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड एक्सिस ऑन विच द अर्थ रिवॉल्व्स, सॉरी इट मूव्स. ओके, जिस पे ये अर्थ जो है रोटेट करती है. ये एक इमेजिनरी लाइन है जिस पे अर्थ रोटेट करती है. तो इस इमेजिनरी लाइन को हम एक्सिस कहते हैं. Another imaginary line running on the globe divides it into two equal parts. अब एक और imaginary line है जो इस ग्लोब को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है. उसको हम क्या कहते हैं? उस लाइन को, दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर. उसको हम इक्वेटर कहते हैं. तो इक्वेटर जो है ये एक सर्कल है जो ज़मीन के बीचों बीच से खींचा गया है. तो इसके जो है ज़मीन के दो हाफ्स बनते हैं, एक निसफ हिस्सा ऊपर की तरफ और निसफ हिस्सा नीचे की तरफ, नॉर्दर्न हाफ एंड साउदर्न हाफ. ठीक, तो नॉर्दर्न हाफ जो है उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और साउदर्न हाफ जो है उसे साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. द इमेजिनरी लाइन रनिंग on the globe divides it into two equal parts. This line is known as equator. The northern half of the earth is known as the northern hemisphere and the southern half is known as the southern hemisphere. These are both equal halves. Therefore the equator is an imaginary circular line and a very important reference point to locate places on the earth. All parallels circles from the equator up to the poles are called parallels of latitudes. Latitudes are measured in degrees. The equator represents the 0-degree latitude, since the distance from the equator to either of the poles is 1/4 of a circle around the earth. It will measure 1/4 of 360 degrees, that is 90 degree. Thus 90 degree north latitude makes the North Pole and 90 degree south latitude makes the South Pole. As such, all parallels north of the equator are called north latitudes. Similarly, all parallels south of the equator are called south latitudes. The value of each latitude is therefore followed by either the word north or south. Generally, this is indicated by the letter N or S, N for north and S for south. For example, both Chandrapur in Maharashtra, India, and Belo Horizon in Brazil, South America, are located on parallels of about 20 degree latitude, but the former is 20 degree north of the equator and the later is 20 degree south of it. We therefore say that Chandrapur is situated as at 20 degree
north, that is 20 degree N latitude, and below horizonate is situated at 20 degree S latitude. We see in figure 2.2 that as we move away from the equator, the size of the parallels of latitude decreases. तो ये लैटिट्यूड्स के बारे में कि ये पैरेलल खींचे गए हैं इक्वेटर के। तो जो हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो जो ये लैटिट्यूड्स का साइज़ है ये डिक्रीज़ होता जाता है, ये कम होता जाता है। तो इससे आगे जो इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं वो हैं, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है बीच में जो इमेजिनरी लाइन है जो इक्वल हाउस में इस ग्लोब को डिवाइड करती है उसे हम इक्वेटर कहते हैं। तो इक्वेटर के जो नॉर्थ साइड में जो लैटिट्यूड्स हैं उनको हम नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स कहते हैं, और साउथ में जो साउदर्न लैटिट्यूड्स, इनमें से कुछ लैटिट्यूड्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड्स हैं। तो वो कौन कौन से हैं? बिसाइड्स द इक्वेटर 0 डिग्री, इक्वेटर इज एट 0 डिग्री, द नॉर्थ पोल 90 डिग्री N एंड द साउथ पोल 90 डिग्री S। ये दो पॉइंट्स बड़े इम्पोर्टेंट हैं। नॉर्थ पोल का पॉइंट जो है 90 डिग्री S और साउथ पोल 90 डिग्री, नॉर्थ का है 90 डिग्री N और साउथ का है 90 डिग्री S। तो ये जो पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट हैं। देयर आर 4 इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, 4 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं जो बड़े इम्पोर्टेंट हैं। नंबर 1 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच इज सिचुएटेड एट 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ये आप ग्लोब पे देख सकते हैं, ये नॉर्दर्न हाफ में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके बाद है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये भी 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर में है। और इसके अलावा जो तीसरा है वो है आर्कटिक सर्कल, ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ में आर्कटिक जो सर्कल है। इसके अलावा चौथा जो है उसको हम एंटार्कटिक सर्कल कहते हैं, ये 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर पर सिचुएटेड है। तो ये 4 जो लैटिट्यूड्स हैं ये बड़े इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं। ठीक, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और फिर है आर्कटिक सर्कल, और इसी तरह से साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्कटिक सर्कल। So these are the 4 important parallels of latitudes. So today we conclude it here. Thank you very much. Take care and goodbye.